Hey everyone, so once again welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta, and in this video we are going to discuss about the clause of Memorandum of Association. And before this we have already covered 3 lectures where we discussed specifically the uh, name clause, the registered office clause and the object clause. So today we will discuss the liability clause, the capital clause and the subscribers clause, subscription clause, and this will be the last lecture regarding MOA and then we'll proceed with some other topic. ठीक है, तो हम लोग लाइबिलिटी क्लॉज पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें पता चल गया. ये हमें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें फॉर्मुलेट करना है. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ये हमें पता है इसमें क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, ये हमें पता चल गया है. एंड आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसको चार्टर ऑफ अ कंपनी भी कहा जाता है. एंड दिस बेसिकली tells us about the scope of the company, and it contains the powers and the objectives of a company. एक company की क्या powers हैं, एक company की क्या objectives हैं, that we comes to know in the memorandum of association. So I can say that this is known as the charter of company. ठीक है, do remember this. All right. So let's begin with liability clause. So section 4 clause 1 subclause D states that the fourth clause has to state the nature of liability that the members incur. ठीक है, तो fourth clause जो है MOA का, that states कि liability क्या है, किस नेचर की liability है कंपनी की. liability 3 तरह की होती है. एक होती है liability by shares, ठीक है, then the limited liability by guarantee, and then there is a unlimited liability. तो क्या आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, तो ये आपको लिमिटेड क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई करना होगा. एंड डू रिमेंबर दिस थिंग दैट द लाइबिलिटी इज सपोज टू बी इनकर बाय द मेंबर्स ओनली. यहाँ पर डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, ये वो लाइबिलिटी है जो कि मेंबर्स इनकर करते हैं. क्लियर? नाउ फर्स्ट रीड अबाउट द liability limited by shares. ये क्या होती है? So if the company is to be incorporated with limited liability, the clause must state the liability of members shall be limited by shares. अगर कंपनी आपकी लिमिटेड है बाय शेयर्स, तो आपके मेंबर्स के जितने शेयर्स हैं उसके बेसिस पर आप उस मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो आपको अपनी लाइबिलिटी क्लॉज में ये स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी लिमिटेड बाय शेयर्स. अब इससे व्हाट डू वी मीन, इससे क्या मतलब है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो, बट आई जस्ट टेल यू बाय गिविंग एन इलस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ मेंबर, ठीक है, जिसके 1000 शेयर्स हैं इन द कंपनी, एंड वेयर ईच शेयर कॉस्ट ₹10, राइट. एंड फॉर से ही हैज़ पेड फॉर the shares of ₹7. उसने ₹7 पे किए हैं for each share up till now, means he has paid ₹7,000. And actually what he has to pay during the entire time period of his in the company, he had to pay ₹10,000. But up till now he has only paid ₹7,000, so 3,000 are left, right? So his liability at the time of winding up of the company will only be till ₹3,000, and that will not be more than that. This is actually what has been written here. The company corporated with limited liability state that the liability of members shall be limited by shares. ठीक है, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा by this illustration. This means that no member can be called upon to pay anything more than the nominal value of shares held by him. तो it only means कि कोई भी member जो कि limited by shares है, उससे जितना उसका nominal value left है उससे ज़्यादा उससे नहीं मांगेगा, उसको नहीं पे करने के लिए enforce करेगा at the time of winding up of the company. ठीक है. Next is the company limited by guarantee. So limited by guarantee से we just mean to say that to what amount a member has guaranteed to be given up. ठीक है, कि कितना उसने guarantee किया है कि he'll give at the time of winding up of the company, that basically comes in the company limited by guarantee. See, if it is proposed to register the company limited by guarantee, this clause will state, है ना, the amount which every member undertakes to contribute to the assets of a company in the event of its winding up. अगर आपकी कंपनी के मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी है लाइबिलिटी उनकी, तो आपको वो मेंशन करना होगा कि ईच मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है
कंपनी की असेट्स के टूवर्ड्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. So this is the company limited by guarantee, and the third used to be the unlimited liability. So this is basically the concept of liability clause. अब the question comes here कि कैसे, क्योंकि हमने पहले अलग अलग clauses में पढ़ा है कि वो किस तरीके से alter होते थे, तो liability clause कैसे alter हो सकता है. So the liability clause can be altered in the general meeting of the members by an unanimous decision. ठीक है, I just make it right here. So as I'm talking about alteration, so it can be altered in the general meeting of members by the passing of a unanimous decision. Unanimous decision means all the members agree upon this decision, whatever has been taken up. Okay, so with this process, the alteration clause of a MOA can be, the liability clause of a MOA can be altered. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा liability clause. Next is capital clause. So this is basically the last clause. This is the second last clause, which states the amount of the nominal capital of a company and the number and value of the shares into which it is divided. तो basically इस clause में ये mention होता है कि एक company जो proposed company है, जो registrar के पास अपनी company incorporate कराने के लिए जा रहा है, basically registrar उससे ये पूछेगा कि भाई तुमने क्या सोचा है, मतलब कितना तुम अपने entire in the whole life of your company तुम कितना जो कैपिटल है उसको रेज करोगे, क्या तुमने सोच रखा है. इसमें वो बात नहीं कर रहे कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुम्हारे कितनी शेयर कैपिटल है. नो, दिस क्लॉज विल नॉट कवर दैट. रादर इसमें ये मेंशन होगा कि हाउ मच कैपिटल यू आर सपोज टू रेज ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ योर कंपनी, राइट. एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, राइट. और इस कैपिटल को कितने नंबर्स में और कितने वैल्यू ऑफ शेयर्स में डिवाइड करा जाएगा या करना है वो भी इसमें मेंशन होगा. तो दिस इज बेसिकली द कैपिटल क्लॉज. और किस तरीके से आप कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हो? सो बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द कंपनी एंड आफ्टर टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड. इसमें दो चीज़ें हैं. पहला, आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, राइट, स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड by taking the approval of company's law board. अगर ये दोनों चीज़ें, जब ये दोनों जो आपकी needs हैं fulfillment होती हैं, then only your capital clause can be altered, right. But the amendment of 2015 has dropped the requirement of any minimum paid up capital whatsoever both for public and private companies. लेकिन जब आपका Amendment Act of 2015 आया था तो उसके बाद एक जो minimum paid up capital की requirement थी उसको drop कर दिया था, because earlier there was a provision of minimum paid up capital, ठीक है, that you need to have and that you need to mention. But इस अमेंडमेंट के बाद दिस थिंग हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड नाउ चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, देयर इज़ नॉट द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम पेड अप कैपिटल. ठीक है, यू डू हैव टू रिमेंबर दिस. तो ये है आपका कैपिटल क्लॉज का कॉन्सेप्ट. एंड नाउ द लास्ट क्लॉज दैट वी आर गोना डिस्कस इन MOA चैप्टर, दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. दिस इज़ द लास्ट क्लॉज. So the memorandum concludes with the subscribers declaration. तो जो memorandum हो, जो ये जो charter of the company, that is a memorandum of association, ये subscribers की declaration से end होता है. By declaration here means to say कि उनके कितने shares हैं और कितने number of shares हैं, उनका नाम क्या है, and they are signing, right. And this is being done by the directors of the company. Section 3 states that the memorandum has to be subscribed with at least 7 persons in case of public company and by at least 2 persons in case of private कंपनी. तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट कहता है कि जो मेमोरेंडम है वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए बाय एटलीस्ट 7 पर्सन्स अगर वो पब्लिक कंपनी है, एंड बाय एटलीस्ट 2 पर्सन्स, मतलब देयर कैन बी मोर देन दैट बट एटलीस्ट दीज आर द नंबर्स व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, एंड 2 पर्सन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. सेक्शन 4 क्लॉज D states that each subscriber must sign the document and must write opposite his name the number of shares he takes. और declaration में हर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है, ठीक है.
और उसके सामने अपना नाम लिखना है और ये लिखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो अंडरटेक कर रहा है इन द कंपनीज टोटल शेयर्स, राइट। एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नो सब्सक्राइबर कैन विदड्रॉ हिज नेम ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। और एक बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद कोई भी सब्सक्राइबर विदड्रॉ नहीं कर सकता है अपना नाम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स किसी भी ग्राउंड पे, यहाँ ये कह रहे हैं। बट देर इज़ अ केस जिसमें एक एक्सेप्शन वी कम्स टू नो दैट the case is Banwari Lal versus Kundan Cloth Mills Limited, AIR 1937. So in this it was held that, but he may, means the subscriber may withdraw his name before the memorandum is actually registered, as up to that time there is no contract at all. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि हाँ, although the subscriber may not withdraw after incorporation, लेकिन वो memorandum सबमिट होने से, मेमोरेंडम रजिस्टर होने से पहले पहले विड्रॉ कर सकता है, बिकॉज जब तक मेमोरेंडम रजिस्टर नहीं हुआ है तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में फॉर्मुलेट नहीं हुआ है. सो ही मे विड्रॉ बिफोर द मेमोरेंडम बीइंग रजिस्टर्ड, बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ही इज़ नॉट सपोज टू विड्रॉ. सो गाइज, विद दिस वी आर डन विद द मेमोरेंडम of association chapter. We have discussed 5 and 6 clauses, and I think they are more than enough for the understanding point of view. Right. For any doubt, just let me know in the comment section and what part I have left that I need to cover too. That also just tell me in the comment section, so I'll make a separate video for that. So this was it for now. I'll be back soon with the next video with the next legal content. Till then, stay connected with Law Vita. If you're new and watching it for the first time, just subscribe to it. If you like the content, you can give it a like. You can also share it with your friends and colleagues for reaching it to more and more number of people. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.